ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, बाकी कहाँ है? ज्वाइन करो जल्दी से। ओके, कितने आ गए? अभी तो 5 ही आ गए। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने किया था बर्नस्टीन इक्वालिटी, राइट? और उसकी जनरलाइजेशन भी की थी शायद, आई थिंक सो। यस, हाँ। तो हमने की थी बर्नस्टीन इक्वालिटी। एक्चुअली इससे पहले भी हमने की थी वो। यहाँ हमने थोड़ा उतना डिफरेंट नहीं, लेकिन डिफरेंट तरीके से की, क्योंकि सिलेबस में मेंशन था। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। आ गया हमारा व्हाइट बोर्ड। ओके, तो हमने किया था बर्नस्टीन इनइक्वालिटी। बर्नस्टीन इनइक्वालिटी जो कि एसेंशियली ये कह रही है, इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, then the maximum of the modulus on the unit disk of mod of pz is always less than equal to, of course, it is p dash n times maximum on the unit circle modulus of pz. ओके, इसको एडमिट करना है। ओके, तो ये था अपना बर्नस्टीन इक्वालिटी। और उससे हमने डिड्यूस किया, फिर नहीं, इसका एक जनरलाइजेशन हमने किया। इसका जनरलाइजेशन ये था, व्हाट वाज दैट? इफ pz has all the zeros, ये था हमारा, व्हाट वाज दैट? हाँ, if fz is a polynomial of degree n having all its zeros inside, all its zeros inside the closed unit disk mod z less than equal to 1, and pz is any polynomial, and p of z is any polynomial of degree n. Polynomial of degree n with mod of pz less than equal to mod of this capital Fz for mod z equal to 1, then the derivatives will also preserve that relation, and mod of pz would be less than equal to mod of f dash z for mod z greater than equal to 1. तो इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं वापस ना, यूजिंग द कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल। मतलब हमने इसको प्रूव किया था, और इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं ये अपनी बर्नस्टीन इक्वालिटी। ओके, सो सारे जीरोस अंदर है, और ये इसको डोमिनेट करता है, जिसके सारे जीरोस विद इन द यूनिट डिस्क है। और अगर वो किसी भी पॉलिनोमियल को डोमिनेट करता है ओवर द यूनिट सर्कल, देन द डेरिवेटिव्स वुड आल्सो हैव द सेम थिंग। मतलब इसका डेरिवेटिव भी p dash z को डोमिनेट करेगा ऑन द आउटसाइड ऑफ द डिस्क एंड आल्सो ऑन द बाउंड्री। तो आई थिंक ये हमने किया था। ओके, इसके बाद ओके, एक और थ्योरम हमें करना है, व्हिच इज रिगार्डिंग द कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल, जो लास्ट टाइम हमने किया था। वो ये है कि if pz is a polynomial of degree n, is a polynomial of degree n which does not vanish, यानी इसके सारे zeros which does not vanish inside the unit disk in mod z less than 1, and q of z, as you know, is the, जिसको मैं लास्ट टाइम कहा था, वो इसका कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल, दैट इज p of 1 by z bar
whole bar. So this is its conjugate polynomial q of z. Then modulus of p dash z is less than equal to modulus of q dash z on for mod z bigger than equal to 1. So this is the relation. Actually ये इससे प्रूव हो जाएगी. ओके हाँ, तुम्हें याद रखना है ये v जो हमने लास्ट टाइम जो हमने कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल किया था, हमने ये किया था देन p of z. चलो ये लिखता हूँ नीचे प्रूफ में. ओके लेट्स डू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. इजी है, हमें सिर्फ सिंस हम कह सकते हैं ऑल द जीरोस ऑफ pz lie outside या मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो तो इरेज करता हूँ इसको, ऐसे में करता हूँ बजाय आउटसाइड लिखने के. lie in mod z bigger than equal to 1, therefore all the zeros, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है, therefore all the zeros of qz lie in mod z less than equal to 1 and p of z is equal to q of z on mod z equal to 1. अब देखो कि फिर से यही वाली बात है, एफ जेड की जगह तुम सोच लो क्यू जेड है. अगर क्यू जेड यानी एफ जेड के सारे जीरोस है इनसाइड द क्लोज्ड यूनिट डिस्क और ये डोमिनेट करता है, यहाँ डोमिनेट नहीं है, बराबर है, लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल टू सेटिस्फाई हो जाएगा. सो इट इंप्लाइज दैट बाय अबव थ्योरम, therefore by previous theorem, we have mod of p dash z is less than equal to mod of q dash z for all mod z bigger than equal to 1. So that just proves this here. ठीक है, इससे हम एक फर्दर एक रिमार्क या एक डिडक्शन कर सकते हैं कि ये यूज करके, ये आइडिया यूज करके डिडक्शन ये है, ऐसा रिमार्क लिख सकते हैं इसको कि अगर let m be equal to, जैसा कि हम इसको डिनोट करते हैं भाई, maximums are equal to 1 p of z where pz is a polynomial of degree n. उसका मतलब ये हुआ कि p of z जो है होगा less than or equal to m. ये हम बहुत बार कर चुके हैं इस आइडिया को यूज for mod z equal to 1, which means it is strictly less than lambda m. I should write mod of lambda m for mod z equal to 1 and modulus of lambda belonging to C with modulus of lambda bigger than 1. Okay, therefore I can say f of z cannot vanish. जब मैं लूँ f of z equal to p of z minus lambda m, ये जो ये है, this cannot be 0 for what? For mod z less than 1. क्योंकि suppose it is, for if f of z naught is equal to, तो मैंने गलत लिखा है, ठीक है, हाँ हम ये प्रूव कर सकते हैं. सपोज अगर ये 0 है for some mod of z naught less than 1, it would imply that p of z naught is equal to lambda times m for some mod z naught less than 1, right? What would that mean? That means modulus of p of z naught would be equal to lambda m for some, okay, modulus of lambda into m for some z naught less than 1, which is bigger than m, क्योंकि ये जो है modulus of lambda is bigger than m for some z naught inside. ये तो violate करेगा किसको? मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल. कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है जो कि ये पॉलिनोमियल्स होते ही हैं, तो एंटायर फंक्शंस हैं
कि अंदर डिस्क के किसी भी पॉइंट पे बाउंड्री से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता, which violates the maximum modulus principle. तो हम ये मानेंगे कि this does not vanish, लेकिन है तो ये पॉलिनोमियल है ना, इट्स p z minus some number, it's again a polynomial, सिर्फ इसकी कांस्टेंट टर्म चेंज होगी। तो कहने का मतलब अगर इसके तो n जीरोस होंगे तो वो कहाँ होंगे, बाहर होंगे, है ना। अगर ये वैनिश नहीं करता तो इसके सारे जीरोस होंगे बाहर, इसका मतलब हुआ अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो इसके सारे जीरोस इनसाइड होंगे। सो देयरफॉर या लेट g of z be equal to, जैसा कि हम करते हैं, z raised power n into f of 1 by z बार यहाँ पे है और f पे होल बार है, which is equal to, it would be z raised to power n, इसको करो 1 by z, यहाँ तो खैर कुछ है नहीं लेकिन बार लगेगा, so it would be p of 1 by z बार होल बार, पी जेड का कॉन्जुगेट आ जाएगा, माइनस क्या जाएगा, इट शुड बी लैम्डा बार इनटू z रेज पावर n, जो कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन में है, इनटू m। m तो खैर पॉजिटिव नंबर है तो उसको बार लगाना, जैसे रियल नंबर, तो ये हो जाएगा वो। अगर इसके अब चूंकि ये fz का कोई भी जीरो इनसाइड नहीं है, राइट, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्चुअली, लेट मी राइट इट एज q of z, इसको मैं qz से रिप्रेजेंट करता हूँ, minus lambda bar m into z raised power n. Say, so then all the zeros of gz lie in mod z greater than equal to 1. ठीक है, अब देखो सिचुएशन क्या है हमारे पास, और साथ में ये भी, सो नाउ व्हाट डू आई हैव, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसे, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज p of z. p of z doesn't, माने f of z does not vanish. So g of z, पहले तो ये है कि now we have a situation like this. We have g of z has all its zeros inside mod z less than equal to 1, है ना, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, इसके बाहर है तो उसके अंदर हो। एंड f of z, as we already know, रेसिप्रोकल में ये प्रॉपर्टी होती है, is equal to mod of g of z on, क्योंकि इसका ये रेसिप्रोकल, z equal to 1. Hence by above theorem जो हमने किया था, क्या मिलेगा मुझे, मॉडुलस ऑफ f dash z should be less than equal to मॉडुलस ऑफ g dash z, बस यही मुझे चाहिए था। अब f dash z का तो होगा p dash z, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, लेकिन g dash z का आएगा, यहाँ हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। So let me do that, okay, which implies modulus of p dash z is less than equal to q dash z minus lambda bar n m into z raised by n minus 1. But now you know that throughout the theorem हमने यूज किया कि mod of lambda हमें इसकी जरूरत है ना, lambda का आर्गुमेंट कुछ भी हो, but lambda का modulus should be bigger than 1. Now you just have to remember one thing, you know that modulus of a, कोई भी दो complex numbers हो, is always bigger than equal to mod of modulus of a. It is triangular equality. But when will there be equality? Equality तब होगी जब ये ओपोजिट सेम डायरेक्शन में होंगे, हैं, अगर ये सेम डायरेक्शन में है, मतलब ए भी ऐसे ही है, बी भी ऐसे ही है, तो उसका मतलब माइनस बी इस डायरेक्शन में है, राइट, तो उसका मतलब उसका जो मॉडुलस होगा सीधा सब्ट्रैक्शन होगा मॉडुलस का, वंस वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, जैसे अगर सेम डायरेक्शन है तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी आ जाए। सो व्हाट वी डू, वी चूज argument of lambda bar
इन सच अ वे, क्योंकि मॉडुलस के साथ हमें नहीं करना, क्योंकि हमें चाहिए कि इसका मॉडुलस बिगर देन, मतलब हम सपोज ऐसा नहीं है, ये दोनों वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे, मैं क्या करूंगा, मैं इस लेमडा का आर्गुमेंट बदल दूंगा, तो ये वेक्टर आर्गुमेंट से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, तो मैं इसको इसके अलाइनमेंट में लाऊंगा यहाँ सीधा. So we can choose argument of lambda in such a way so that modulus of q dash z minus lambda bar n into m times z raised power n minus 1. Yeah, you will look for each z. We can choose for each z. We can choose this is equal to mod of q dash z, right? Minus lambda times n m mod of z raised power n minus 1. Just ऐसे z raised power n minus 1. ओके, अब देखो mod of a minus b मॉडुलस कब होगा, ये डिपेंड करेगा बड़ा कौन है ना, बिकॉज दिस हैज टू बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर बाहर मॉड लगा है तो उसका मतलब ये हुआ कि बड़ा माइनस स्मॉलर. अब बड़ा कौन है, बड़ा सिंपल है, वो ये कि by using maximum modulus principle, q of z, let me write it here. Now this is equal to, चलो मैं लिखता हूँ, q dash z minus lambda bar lambda modulus n into m for mod z equal to 1, which is equal to modulus of q, क्योंकि बड़ा ये होगा, हम अभी करेंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, तो चूंकि बाहर मॉड है, we have to take the big one, and we should have lambda modulus n m minus mod of q dash z, because q dash z is a polynomial of degree n, is less than equal to p dash z. We've already established that, है ना, क्योंकि इसके सारे जीरोस बाहर हैं, जो ना हम करते आए कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव, जो ना इससे पहले हमने की थी इनइक्वालिटी, which is less than equal to n times n, which is strictly less than modulus of lambda times n. तो चूंकि ये ऑफ कोर्स ये बड़ा है, तो मॉडुलस में ही बाहर आ जाएगा पहले और सब्ट्रैक्ट वो होगा. So therefore I have got p dash z is less than equal to mod of lambda into n m minus q dash of z for mod z equal to 1. So that is, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, modulus of p dash z plus modulus of q dash z, जो इसका conjugate polynomial है, is less than equal to nm times mod of lambda for mod z equal to 1. Now using the continuity of the thing and letting mod of lambda approach 1, मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा सा, खत्म करते हैं यहाँ पे, we get modulus of p dash z plus modulus of q dash z, ये इसका conjugate polynomial is less than equal to n times m for mod z equal to 1. So this was a deduction कि खाली p dash z नहीं, अगर मैं उनको ऐड भी करूं उसके conjugate का प्लस तब भी है इससे लेस देन, मतलब ये तो होता ही है लेस देन, होता है ना अपना इंडिविजुअली, लेकिन अगर मैं इसको इसका ऐड भी करूं इसके conjugate का डेरिवेटिव, still it would be less than equal to n times m. m तुम्हें पता है, it's the maximum of the p in modulus over the boundary of the unit disk. Okay, so ये एक चीज था. Okay, let's finish this. हाँ, अब हमें थोड़ा सा लंबा सा एक थ्योरम करना है, छोटे छोटे रिजल्ट्स थे, वो ये था, it's a refinement of, एक्चुअली ये अजीज साहब ने की है कश्मीर यूनिवर्सिटी में एग्जाम, नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं, पढ़ाते थे वहाँ पे, मुझे भी पढ़ा है, हाँ, तो उन्होंने ये इसको थोड़ा बेटर किया, इम्प्रूव किया, रिफाइन किया. So let me write it as a theorem
refinement of Bernstein's inequality. Refinement of Bernstein's inequality वो ये है, if P is a polynomial of degree n, then modulus of P dash z plus n times P of z minus z times P dash z is less than equal to n into n, where of course you have none. It is the maximum of the modulus over the unit disk. Okay, for of course mod z equal to 1. तो एज अ थ्योरम, मैं इसको थ्योरम, ये थ्योरम है हमारा जिसको हमें करना है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ द, जो हमने अभी तक किया, हमें था दिस इज लेस देन, फिर हमने दिया था इसका और कॉन्जुगेट. अब हमें साथ में ये भी कर, लेकिन अगर हम इसको ये भी ऐड करें कुछ और चीज, that is n times p of z minus z whatever, then this would be also true. You have to remember, जब मैंने इक्वालिटी की बात की थी ना, for p of z equal to z raised to power n, तो yes, तो ये 0 हो जाएगा. जब मैं p of z को z raised power n minus 1, what would be n times z raised power n, yes, ये हो जाएगा 0. अगर मैं p of z को लूँ ना z raised power n, क्योंकि वो then p dash z would be exactly equal to this on mod z equal to 1. In that case, of course, ये 0 हो जाएगा. Okay. So for the proof of this theorem, we need a lemma. We need the following lemma. So let's prove the lemma. पहले उसको state करते हैं. Okay, what's the statement of the lemma? If p of z is a polynomial of degree n, polynomial of degree n, then and z1, z2 up to zn are the zeros of the polynomial, are the zeros of z raised power n plus a, where a is not equal to minus 1. Then for any complex number t, we have t into p dash t, derivative t into p dash t is equal to n divided by 1 plus a into p of t plus 1 by a divided by n into summation k runs from 1 to n zk p of tzk whole divided by zk minus 1 का square. So ये हमें पहले लेमा प्रूव करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट proof. Okay, let's do the proof of the lemma. थोड़ा सा लंबा चौड़ा है. इसमें हम क्या करेंगे ना, let t be any complex number. Now consider मैंने क्या लिया था, f. ठीक है, अब p है मेरे पास पॉलिनोमियल. Consider हम एक और पॉलिनोमियल बनाएंगे with the help of p, f sub q of z
is equal to p of tz minus p of t divided by z minus 1. अब जो ये है मैंने t को फिक्स कर दिया एंड इट्स अगेन ए पॉलिनोमियल इन z क्योंकि z minus 1 इसको डिवाइड करेगा. एक्चुअली यू कैन इजीली चेक दैट कि अगर मैं लेता हूँ p of tz, चलो पहले p of z कुछ रखते हैं. सपोज p of z was equal to a n z raised power n plus a n minus 1 z raised power n minus 1 plus actually a1z plus a0. What would be p of tz? p of tz होगा a n t raised power n z raised power n plus a n minus 1 t raised power n minus 1 z raised power n minus 1 plus so on and so forth. a1 zt plus a0 of course. और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या था बिल्कुल तो सब्ट्रैक्ट देम सो यू शुड सी दैट कांस्टेंट टर्म तक हो जाएगी खत्म और हमें मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए. व्हाट वाज दैट सब्ट्रैक्शन किसका था p of t सॉरी p of t चलो p of t भी लिखते हैं यहाँ p of t है तो p of t होगा a n t raised power n a n minus 1 t raised power n minus 1 plus so on and so forth a1 t plus अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये तो हो गया खत्म. सो यू वुड एक्चुअली गेट इट should be an, let me write it as into t raised power n common होगा z raised power n minus 1 plus an minus 1 t raised to power n minus 1 into z raised power n minus 1 minus 1 plus so on and so forth. Okay, what do you get? Plus so last पे आएगा a1 t into z minus 1. But you can write that as इसका फैक्टर है ना. अगर मैं इसको z raised power 1 minus 1 से डिवाइड करूं इसको भी थ्रो आउट करूं divide by z minus 1 what do I get? Okay, you have to remember this z raised power n minus 1 divided by z minus 1 is equal to 1 plus z square up to this is just the formula for तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो you get this. It applies for every power. So it should be basically, जब मैं इसको divide करूँगा, it should be an t raised power n into z raised power n minus 1 plus so on and so forth up to 1 plus an minus 1 t raised power n minus 1. It should be z raised power n minus 2 plus z raised power n minus 3 plus so on and so forth plus z plus 1 ऐसे plus so on and so forth plus a1t z minus 2. ये जो ये ft of z है it's again a polynomial but of degree n minus 1 क्योंकि highest power यहाँ आएगा 1 minus 1. ठीक है. सो ये जो हमने लिखा मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है ये तो समझ के ये रफ है अगर तुम एग्जाम में तुम ऐसे डायरेक्टली भी लिख लोगे देन एफ टी ऑफ जेड जब मैं जिसको मैंने ऐसे लिखा यहाँ पर मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ जिसको हम बाद में यूज करेंगे शायद हम बाद में यूज करेंगे. व्हाट वुड बी एफ टी ऑफ 1? इट विल बी ये बन जाएगा z अगर z की जगह 1 है तो इट शुड बी n सो इट शुड बी n टाइम्स a n t raised power n plus n minus 1 times a sub n minus 1 into t raised power n minus 1 plus so on and so forth. Of course you would have last पे क्या है अपना a1t. okay so अगर मैं इसको लिखूं t into n a n t raised power n minus 1 plus n minus 1 into a sub n minus 1 t raised power n minus 2 plus so on. Can you see that ये क्या बना? ये इसमें क्रूशियल स्टेप होगा कि एफ टी एट 1 होगा अगर मैं z को 1 लेता हूं t into it is nothing but p dash at t यानी एफ टी at 1 is t p dash at t. पहले तो ये कि it's a polynomial degree n minus 1 which is important. Furthermore, अगर मैं इसको 1 पे इवैल्यूएट करूंगा you get t into p dash t. टाइम हो रहा है खत्म लेकिन ये लेमा तो लगता नहीं खत्म होगा इसमें. Nevertheless, now what do we have? We are going to use something called Lagrange's interpolation. तुमने किया है कभी ये Lagrange interpolation? ये भी तुम्हारा रफ ही मान लो.
क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। ये है, you can always create a polynomial. Suppose तुम्हें कहे कोई मुझे ऐसा polynomial दो जिसके prescribed values हों at, अगर suppose p is of degree n, मान लो, या p, चलो p is of degree n, ठीक है, तो मुझे तुम कुछ ऐसा, can you always create, मतलब कैसे मैं कहूँ, चलो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं कह रहा हूँ आइडिया ये है कि can we create a polynomial of degree n such that given distinct values, मतलब given some distinct points, say z1, z2 up to zn plus 1, अगर मुझे n plus 1 points मिले, I would have, मतलब a prescribed value, I would have pzi is equal to मेरी मर्जी का कोई value, say bi, for all I greater than equal to up to n plus 1. यानी अगर किसी पॉलिनोमियल के हमें n plus 1 पॉइंट्स पे वैल्यूज पता है, तो we can uniquely determine that polynomial. Or if you tell me to find a polynomial of degree n which assumes desired prescribed values at n plus 1 points, it's always to construct that, and construct is very simple. You just have to write down, suppose तुम्हें चाहिए कोई polynomial और तुम्हें पता है कि इसका वैल्यू ये होना चाहिए, मतलब यू वांट टू से दैट कि p of zi is equal to ai for all I runs from 1 to up to n plus 1, और zi distinct values हैं, then if you write down an expression like this, जिसको हम बोलते हैं Lagrange's interpolation, वो है summation k runs from 1 to n plus 1 ak z minus z1 into z minus z2 up to z minus zk minus 1 z minus zk plus 1, इसको खत्म करना है, जो k लिया उस फैक्टर को अलग करना है, मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करूंगा, into z minus zn plus 1 whole divided by zk minus z1 into zk minus z2. अगर मैं इस तरह से पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करता हूं, जो कि है इट्स अ पॉलिनोमियल, नीचे नंबर्स हैं, zk minus zk minus 1, zk minus zk plus 1, so on and so forth, zk minus zk plus 1. अब ऐसे थोड़ा ये शायद n plus 1 अजीब लगे, लेकिन अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे, बट बाय दिस आई मीन दिस इज एक्चुअली a1 into z minus z2, क्योंकि मुझे जो में इंडेक्स होगा उस फैक्टर को ओमिट करना है, into z minus z2 up to z minus zn plus 1 whole divided by, of course, z1 minus z2 into z1 minus z3, यहाँ 3 है, ठीक है, into z1 minus zn plus 1 प्लस इसी तरह से a2, फिर यहाँ आएगा z minus z1 into z minus z3, 2 वाले फैक्टर को हम ओमिट करेंगे, बाकी सारे लिखेंगे. Okay, so then I have z2 minus z1, z2 minus z3. तो मैं समझ आ रहा है ना कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. प्लस इसी तरह से जाते जाते you would have of course n plus 1 z minus z1, लेकिन यहाँ अब हमें n plus 1 फैक्टर को ओमिट करना है, तो यहाँ n तक ही जाएगा, राइट, and in the denominator I would have zn plus 1 minus zn plus 1 minus z2 up to zn plus 1 minus zn. अगर तुम इस पॉलिनोमियल को देखोगे, अगर तुम्हें कहूंगा व्हाट इज p of z1, देखो z1 फैक्टर हर एक में है, सिवाय इसके, इसमें z1 फैक्टर नहीं है. जब मैं z1 दूंगा वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, सारे जीरोस हो जाएंगे, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, you would get z1 minus z2 z1, ये 1 बन जाएगा, you would get a1. इसी तरह से p of z2 होगा a2,
एंड इसी तरह से p of zn plus 1 होगा an plus 1. So it is fine. और ये पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स दीज आर नंबर्स. और डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? हर एक फैक्टर की डिग्री n है. n ही आएंगे ना फैक्टर्स, क्योंकि एक को हमने ओमिट किया, टोटल थे n plus 1 फैक्टर्स. So it's a polynomial of degree n which assumes our prescribed values at n plus. It would be a unique polynomial. ये ऐसा ही होगा, मतलब which means that कोई भी polynomial, it fixes the if we fix the values at n plus 1 points, it fixes the polynomial. Of course, those have to be distinct points. That's what we would expect. Okay, अगर ये क्लियर हो गया तो चलिए हमें इसको यूज करना है. लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. बाय द वे, इसको लिखने का ये तरीका भी हो सकता है. समेशन k runs from 1 to n. अब मुझे पता है a k is nothing but it is just the value, it is just p of zk. और इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं वो फैक्टर इसमें ऐड कर दूं, I can write it as z minus z1 into z minus z2. मैं ओमिट कुछ नहीं करूंगा, बल्कि उससे मल्टीप्लाई भी करूंगा जो फैक्टर ओमिटेड है, और उससे डिवाइड भी करूंगा. So it would be z minus zk, क्योंकि मैंने इससे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया. और साथ में क्या है? साथ में है अपना ये zk minus z1, so on and so forth. Of course zk, of course वो मिसिंग है, राइट? वो ना जो था फैक्टर हमारा मिसिंग है एक, तो इट इज zk minus zk minus, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना ऑब्वियसली. zk minus zk plus 1 up to z minus zn plus 1, of course zk. तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं. लेकिन व्हाट इज दिस? ये है एक्चुअली n plus 1 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस होंगे z1 z2 zn plus 1. लेट्स कॉल दैट wz. यानी मैं इसको लिख सकता हूँ p of z is equal to summation k runs from 1 to n plus 1 p of zk into, मैं लिखूंगा w of z divided by z minus zk into something here where w of z is nothing but वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस मेरे प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज थे. और यहाँ पे आराम से मैं लिख सकता हूँ w dash z, क्योंकि अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँ, what would be w, what is w dash z? It would be many times, एक को ऐसे रखो बाकियों को डिवाइड करो, वैसे ही कुछ है ना. यानी it would be, पहले इसको करेंगे तो you will get z minus z2, लेकिन जब मैं इसको इवेलुएट करूंगा, you just do that. This is actually always equal to z minus z1 up to z k minus zk minus 1 into zk minus zk plus 1, so on and so forth, zk minus, जो कि मैंने वहां सब्स्टिट्यूट किया. यानी इसको ऐसे भी लिखने का तरीका है. तो हमारे जो इंटरपोलेशन पॉइंट्स हैं z1 z2, दे आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो इसको इस तरह से नीट फॉर्म में लिख सकते हैं. Lagrange's whatever क्या था, इंटरपोलेशन फॉर्मूला. लेकिन अभी तक हमने थ्योरम को स्टार्ट भी नहीं किया, लेमा को, और हमारे पास बचा है 1 मिनट. देखो उसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरा पॉलिनोमियल है ftz माइनस क्या था, ft, ये था tz माइनस मैंने क्या, अभी ना जो पहले हमने लिया था पॉलिनोमियल, कहाँ गया, हाँ ये वाला पॉलिनोमियल ftz जो है, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, as you can see. तो इसको इंटरपोलेट करने के लिए आई नीड n पॉइंट्स, क्योंकि डिग्री से एक ज्यादा, अगर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 है, I would need n points, n distinct points that would actually, क्या बोलते हैं, with the help of which I can write an expression of that interpolation type. प्रॉब्लम ये है कि हमारा टाइम है less than 1 minute, so no issue.